दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बायो के टॉपिक क्लोनिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये बायो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत ही इजी है। हमने पहले क्रोम पे क्लोनिंग को सर्च करना है। व्हाट इज़ क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग को पार्थेनोजेनेसिस भी कहा जाता है। Cloning is the process of producing individuals, organisms with identical genomes either by nature or artificial means. In nature, some organisms produce clone through asexual reproduction. जो बहुत से जो clones हैं ना वो asexual reproduction के ज़रिए cloning करते हैं. This production of an organism by itself without a mate is known as parthenogenesis. What is cloning in simple words? Cloning को सादा लफ्ज़ों में क्या कहा जाता है? समरी इसकी है, क्लोनिंग डिस्क्राइब्स द प्रोसेस यूज्ड टू क्रिएट एन एग्जैक्ट genetic replica of another cell, tissue or organism. The copied material which has the same genetic makeup as the original is referred to as a clone. The most famous clone was a Scottish sheep named Dolly. What is cloning called? The artificial cloning of organisms, sometimes known as reproductive cloning, is often accomplished via somatic cell nuclear transfer, a cloning method in which a viable embryo is created from a somatic cell and an egg cell. What is cloning in biology mean? Cloning को biological mean में क्या कहा जाता है? The process of genetically identical copy of a cell or an organism. Cloning happens all the time in nature. In biomedical research, cloning is broadly defined to mean the duplication of any kind of biological material for scientific study, such as a piece of DNA or an individual cells. What is cloning? What is cloning and its types? There are three different types of artificial cloning: gene cloning, reproductive cloning, and therapeutic cloning. Gene cloning produces copies of genes or segments of DNA. Reproductive cloning produces copies of whole animals. Who introduced cloning? G.B.S. Haldane was first to introduce the idea of human cloning, for which he used the terms clone and cloning, which had been used in agriculture since the early 20th century. What is first clone human? On December 27, 2002, the group announced that the फर्स्ट क्लोन बेबी नेम्ड ईव, जिसको पहले क्लोनिंग के ज़रिए मतलब कि क्लोनिंग इसको रिसर्च की गई, उसे ईव कहते हैं. ईव हैड बीन बॉर्न द डे बिफोर बाय 2004. वो 2004 में पैदा हुआ. उसे ये बीमारी हुई, मतलब कि क्लोन की बीमारी हुई. क्लोन क्लेम टू हैव सक्सेसफुली ब्रॉट टू लाइफ 14 ह्यूमन क्लोन. व्हाट इज़ द फर्स्ट क्लोनिंग? फर्स्ट क्लोनिंग किस पे की गई? एक शीप पे की गई जिसका नेम डॉली था. Was announced to the world with a paper published in 1997 in the journal Nature. इसके बाद व्हाट इज़ क्लोनिंग इम्पॉर्टेंट? क्लोनिंग में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? Researchers can use clones in many ways. An embryo made by cloning can be turned into a stem cell factory. Stem cell are an early form of cell that can grow into many different types of cell and tissue. Scientists can turn them into nerve cell to fix a damaged spinal cord or insulin making cells to treat diabetes. What is the difference between DNA cloning and cloning? DNA cloning और cloning के दरमियान क्या डिफरेंस है? Gene cloning is the technique to obtain clones or identical copies of a particular DNA molecule, whereas in cell cloning, a group of genetically identical cells having descended from a single cell is obtained by recombinant DNA technology. What is cloning PDF? Cloning PDF क्या है? In biology, the term cloning is used for describing the process where a genetically identical copy of DNA fragment, a cell, tissues, or an entire organism is being produced. This is a process which happens within nature, such as when a cell replicates itself asexually without any changes of a genetic setup. When did cloning start? Cloning कब शुरू हुई? In 1958, British biologist Johann Gurdon was the first to successfully clone an animal using somatic cell nuclear transfer. In this approach, the nucleus from a somatic cell is removed and placed into the enucleated egg of cell of another
animal. What is an example of clone? Clone के example क्या? Clone are the organisms that are exact genetic copies. Every single beat of their DNA is identical. Clones can happen naturally. Identical twins are just one of many examples. What are the four main uses of cloning? जो चार main uses बता रहे हैं इसके, ये चार सारे main uses हैं. Our experience have told us that while a little work, we humans can clone just about anything we want, from frogs to sheep, and probably even ourselves. So we can clone things, reviving endangered or extinct species, reproducing a diseased pet, uh, cloning livestock, drug production, cloning humans. इस तरह ये सब हमने क्लोनिंग के बारे में पढ़ा है. अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ओके, खुदा हाफिज़. हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे. तो जो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे फोकल लेंथ के ऊपर है. व्हाट According to Wikipedia, the focal length of an optical system is a measure of how strongly the system converges or diverges light. It is the inverse of the system's optical power. तो यहाँ इंडिकेट करता है फोकल लेंथ को. फोकल लेंथ का क्या क्राइटेरिया? द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ अ मिरर एंड द ऑप्टिकल लेंस ऑफ अ मिरर. Mirror of the optical fiber, which is focused on the length of mirror, and reflecting mirror are used in the bouncing back system of the technology. What is focal length? Answer. The definition of focal length can be stated as the length between the lengths of convex mirror and the lengths of concave mirror of including pupils meeting of the converging and the diverging of pupil. Mirror are concave type and the point of focus of the lens of the mirror. Converging of focal length of different substances used in the distance between PR. What is a focal length? In a short, focal length that determines shows how much of sense is captured. Allows you want to go to a wider field of views in a one image lenses without focal length and a telescope. Telephoto lenses have smaller field of view.
What is focal length in 10th? Focal length defined as a length is used in the focal length of optical power. A positive focal length indicates the water system converts the light, while a negative focal length indicates negative focal length. Reverse the light. A positive action is used in the diagram of focal length is a point through which reflected rays are passed through to indicate it, and the principal axis it is located in the middle. Used in the focus point of the tenanted Wikipedia, which is reflected back bones through it, and the optical mirror is indicated in the focal point. Units, the focal length क्या है? Focal measure termed to unit in it is called focal length. It is measured. And what is focal length? Topper. Focal length is toppered. Focal length of length is distant. Focal length of mirror is a distance. Parallel to the principal axis meet after refraction through lens on seams on meter related, but focal length is the distance between. And the distance between the principal and the pole of mirror or curvature. And what is focal length? Used in the what are 5 focal length in meter? The 5 mm normal after 5 years testing lenses we think that are for Taylor forces.
They are used telescope on the what is difference between in the telescope and mirror formula. The mirror formula represent the relationship used in the distance of the image with the focal length f of physical centrum. Mirror formula is written 1 over f 1 over v plus 1 over strain. Here u and v are the distance of the object and image from the pole of the mirror representatively. Used in the spherical mirror of object and hence the curvature is found. What is a focal length and focal length of class 10th is used in it, and how the syndrome is worked today by the putting and add it. Hence they are worked out by the different polarization of the substance which are formed eligibly by their work sense and used in the indications of the principle of focal length. They are represented by different criteria of substance they are used. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टार्च और ग्लाइकोजन लेबोरेटरी के साथ एज अ जनरल कॉन्सिक्वेंस स्टार्च ग्लूकोज डिफरेंट इन देयर सॉल्युबिलिटी होते हैं। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड वाटर इनसॉल्युबल सेमी क्रिस्टलाइन अमाइलोपेक्टिन एंड नियरली अमाइलोपेक्टिन सारे कैप्टिव branched with the insoluble material. Amylopectin or amylose and nearly linear amylose interpreted with the amorphous regions of amylopectin. Glycogen contrast is monthly water soluble. What is difference between starch and glycogen? The energy reserve of animals is a more highly branched. ये यूज होते हैं मोर रायरली ब्रांच्ड वर्जन्स ऑफ माइलोपेक्टिन और स्टार्च ऑफन क्रिएटेड होते हैं इन कर्व्ड सरफेस ऑफ द जनरली वर्क आउट ऑफ डिफरेंट फेदरिंग कंडीशंस एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजन एंड glycogen they are formed in the rectilinear work of starch bonded element, hence they were found out
by the different categories of amylopectin and hemisphere of enzymes. They doesn't eat by the preference of molecules, hence they are blocked by the different criteria of enzymes, which is formed only on by dipping of different states that are used in it and formed as the outer surface of the curved material. They are not shown by here, and which is shown by different criteria of molecules that is not done by their scroll of enzymes, and hence they can be prepared by the activity of criteria that are not blown up by hemisphere, which is controlled by its activity, and hence the control agents of enzymes is used in it, and they are much activated of such beautiful place that are not attracted by the space version of surface, and hence which is formed by it, and they can be glucagon by the structures of different materials, and used in the different criteria of amylopectin and amylase enzymes. Hence they can be approved in a various linear by mass of strategy, and which is not shown by their activity. Their creative activity is done by different starch and amylose sugar, and hence they are not abundant and never be used. There is used in the different glycogen of enzymes, glycogen storage, and different criteria. What is formula for glycogen? Glycogen C24H42021. Release in glycogen structure of enzymes. हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हमने पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर के ऊपर या व्हाट इज सेल के ऊपर। व्हाट इज सेल? सेल जो होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स है, और ये जो कर्वेचर इसका यूज हो रहा है यहाँ पे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। द ह्यूमन बॉडी जो है इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ये बॉडी की स्ट्रक्चर को फाइंड करते हैं।
टेक न्यूट्रिएंट्स करते हैं फूड के साथ, कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी के अंदर और कैरी आउट करते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन के साथ। व्हाट इज़ सेल इन डेफिनेशन? Cell is defined as smallest basic unit of life that is responsible for all the life's process. सेल जो होते हैं स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स होते हैं। सेल कैन रेप्लिकेट होता है इटसेल्फ, ये हैंस ये नॉन आर्टिस्ट के साथ भी यहाँ पे यूज़ करा है। और रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली यूज्ड है। और इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे लाइफ स्पेन बियोलॉजिकल मेथड के साथ यहाँ वर्केबल है। व्हाट इज सेल एंड इट्स टाइप्स? Cells are broadly categorized into two types: eukaryotic cells which possesses a nucleus and prokaryotic cells which lack a nutrient but still has a nucleotide region. प्रोकैरियोट्स जो होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, whereas जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो रेदर होते हैं सिंगल मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के साथ। और यहाँ पे सिंगल सेल जो मल्टी सेलर न्यूक्लियस हैं वो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया उनको रॉबर्ट हुक के मुताबिक। तो यहाँ पे अगर देखें, रॉबर्ट हुक सजेस्टेड द नेम ऑफ सेल्स इन 1965 फ्रॉम लैटिन सीलिया मीनिंग स्टॉल which is used in the different periodic activity of different substances. Here they can be shown and used it. They are recognized in the cell type of organisms. यहाँ पे सेल क्या वर्क्स करता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल की यहाँ पे फाइंड है। और व्हाट इज सेल इन बायोलॉजी? सेल्स जो बायोलॉजी के मुताबिक अगर देखते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑल लिविंग थिंग्स के। ह्यूमन बॉडी जो है कंपोज्ड है ट्रिलियन ऑफ सेल्स के, प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को, न्यूट्रिएंट्स को, फूड को कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स की एनर्जी के साथ और कैरी आउट करते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन के अंदर। व्हाट इज सेल स्ट्रक्चर? सेल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, सेल कंसिस्ट है 3 पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर और बिटवीन 2 साइटोप्लाज्म के ऊपर। विद इन साइटोप्लाज्म जो है इसका लाई इंट्रिकेट अरेंजमेंट ऑफ फाइन फाइबर्स है, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ मस्कुलाइंस और डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर और ऑर्गेनलीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। और अगर देखें व्हाट आर द 7 यूनिट्स ऑफ सेल, 7 यूनिट्स ऑफ सेल कौन से हैं? स्ट्रक्चर सपोर्ट है, हाउस मेड जो है वो ब्रिक से होता है, ग्रोथ होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्शन होती है और ये इसी के अंदर यूज्ड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर पीक प्रूफ को आपने यहाँ पे कट कर देना है। हाउ कैन आई कंट्रोल दैट ज़ीरो इन अ फ्रैक्शन बाय फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? 0 divided by any number is equal to 0, so 0 can be written as fraction. Rational number of fractions are SOS. Rational number as if you can write it in the
Answer is a true. Proper fraction is an improper fraction with a value less than denominator. And what is a fraction with a 4? Fraction with a class 4 definition. Fractions represents the parts of a whole or collection of objects. They should be improper fraction. Improper fraction of the kilomoles of substances which are created by not destroying them, and hence they can be improved by it, and they can be written in the collection of both collections are used in it, which are formed by the different states of enzymes. Hence they are shown by the predate of different enzymatic proper fraction. Improper fractions are slightly used in a different they are used in the elections of substances. Nibita chemical logo. They are used in the sibling of a what is proper fraction. जब भी बोलो which is used in the corrections of which is used in the standard proper fraction of itself. They are not remembered by the linear equations. What are types of fraction? Types of fractions are what are two types of the fraction? Two types of fraction are written as what are two types of fraction? Proper fraction, improper fraction, and mixed fraction. They have been helpful for the different creative activity of enzymes which are used in the application systems, and the subling are different in it. हेलो अस्सलाम वालेकुम ये कैसे सब उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे. व्हाट सेल इज अ मेड अप ऑफ सेल इज अ मेड अप ऑफ what is a made up of cells. Cells are made up of different criteria of functions which are relative.
सेल जो कंस्टिट्यूट ऑफ सेल्स हैं कंट्रीज इम्पोर्टेंट बियोलॉजिकल केमिस्ट्री के मुताबिक यहाँ इंक्लूड होते हैं साइटोप्लाज्म इंक्लूड होते हैं। एक वीडियो बनानी है व्हाट इज सेल्स इन एक्रेट एंड लिक्विड ब्रांड कंप्लीट स्टार्ट करता है वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिफरेंट क्राइटेरिया के मुताबिक पढ़ा और सेल के जो मॉलिक्यूल इंटरसेलर ऑर्गेनेलिज न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे यूज हो रहे हैं और उसको फाइंड करने के लिए अपन और इस तरीके से इस तरीके में कंपोज्ड में इसे समथिंग ये ऑर्गेनिक वेरियस सम इंटरसेलर ऑर्गेनेलिज एंड न्यूक्लियस के माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूड है मोटामेलिस इसके मुताबिक साइटोप्लाज्म के वजन के अंदर इंक्लूड होते हैं मेंबर्स दैट सेपरेट देम और व्हाट इज दैट टिश्यू क्या है देयर इज टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हैं or non-living material called intercellular matrix used fills in the space between the मटेरियल जिसके हैं स्पेस बिटवीन द सेल्स और अबंडेंट टिश्यूज और एनिमल्स के अदर वर्क साइडेड उसमें यूज्ड होते हैं Many cells are used in human body. Trillions, 30 cells are used in the trillion body. और ट्रिलियन रिसेंट सेल्स इंडिकेट करते हैं दे सेल्स वर्कआउट करते हैं हमारे आउट कैरी के लिए बेसिक फंक्शन और नेसेसिटी है ह्यूमन के सर्वाइव के साथ व्हाट इट इज़ नॉट जस्ट ह्यूमन सेल्स इनसाइड योर बॉडी व्हाट आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन यूज्ड इन इट
सर्वाइव शो होते हैं, बट ह्यूमन सेल्स इनसाइड सेल्स फंक्शन इंक्लूड करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस क्रॉस अ मेम्ब्रेन, जो यहाँ इसको वर्क करने के लिए यूज होंगे। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, द सेल बॉडी एज कॉल्ड सोमा, द सेल का जो बॉडी उसको सोमा कहते हैं। स्फेरिकल पार्ट जो है इसका न्यूरॉन, स्फेरिकल जो न्यूरॉन्स हैं यहाँ एक्ट करते हैं एक्सॉन्स के टर्मिनल के साथ और सेंड करते हैं इंफॉर्मेशन को टू अदर न्यूरॉन्स के अंदर। और न्यूरॉन्स जो हैं यहाँ पे एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन जो है इसकी न्यूरॉन के एक्सॉन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक है। सेल जो है इसका बॉडी कनेक्ट्स होता है डेंड्राइट के साथ। कैन अ सेल रिप्रोड्यूस, सेल रिप्रोड्यूस कैसे करता है? सेल को रिप्रोड्यूस व्हेन सेल बिकम्स डैमेज हो जाता है टू डाई, बॉडी मेक्स न्यू सेल्स टू रिप्लेस दैम। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कहलाता है सेल डिवीजन। और वन सेल डबल और डिवाइडिंग टू सेल्स होता है, टू सेल्स बिकम्स होता है फोर के साथ। इज अ बैक्टीरिया सेल, इस बैक्टीरियल सेल्स क्या होता है? बैक्टीरियल सेल जो होता है यहाँ पे फाइंड आउट होता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेजरमेंट के साथ। तो यहाँ पे बैक्टीरिया स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया फाउंड होते हैं ऑलमोस्ट एनीवेयर। एक्सट्रीम कंडीशन इज अ फुल ऑफ बैक्टीरिया। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। इसको फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेशर के ह्यूमन बॉडी के फुल बैक्टीरिया फैक्ट की एस्टैब्लिश कंटेन करनी पड़ती है बॉडी के ह्यूमन स्ट्रक्चर के मुताबिक। लेकिन the fact estimated to contain more bacterial cells than human cells. ह्यूमन बॉडी फुल ऑफ बैक्टीरिया फैक्ट एस्टैब्लिश्ड होता है सर्टेन मोर बैक्टीरिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ एक्सट्रीम कंडीशन जो है यहाँ टेम्परेचर प्रेशर के साथ मेजर होगी। और ह्यूमन बॉडी जो है फुल ऑफ बैक्टीरिया है जो एस्टिमेटेड होता है सर्टेन कैटेगरीज या बैक्टीरियल सेल के मुताबिक। लेकिन वाटर सेल ऑर्गेनरीज सेल की ऑर्गेनली क्या होती है और उसका क्या क्राइटेरिया है, तो उसको आपको फाइंड करने के लिए सेल के जो ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे उसको स्पेसिफिक या
या डिफरेंट ऑर्गेनलीज के साथ यहाँ मेजर किया जाएगा। लेकिन मैं रोटी ना खानी, इसका सेल जो है इधर हैव एन डिफरेंट इस तरीके से जो इसका इंटरकटी का डिफरेंस है वो आपको यहाँ फाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे सेल टिश्यू को आपने सेल के स्ट्रक्चर के मुताबिक गेन कर लेना है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर पढ़ाने वाली हूँ। ये बायो का टॉपिक है जिसका नाम है डिस्क स्लिप। तो चलो पहले हम अब डिस्क स्लिप के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क स्लिप क्या है? डिस्क स्लिप a slip disc in the lumbar region of the spine can press on the sciatic nerve and cause pain that often radiates down one leg into the foot. Most people recover from a slip disc within 6 weeks without treatment. बहुत डिस्क स्लिप ना पीछे कमर पे ना हड्डी जो है थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्क स्लिप कहते हैं। What cause a disc slip? A disc to slip? A single excessive strain or injury may cause a herniated disc. However, this material degenerates naturally at one edges, and the ligaments that hold it in place begin to weaken. As this degeneration process, a relatively minor strain or twisting movement can cause a disc to rupture. Is disc slip a common problem? It is estimated that 1 to 5% of all people will have back pain caused by a slip disc at some point in their lives. Slip discs are more common in people over the age of 30 and are about twice as common in men as they are in women. Can a person walk in slip disc? क्या जब किसी आदमी को डिस्क स्लिप हो तो क्या वो चल सकता है? Walking with a herniated disc is usually possible, but the amount of walking that can be done will depend on the severity of the herniation and the level of pain or discomfort experienced by the individual. What are the 4 stages of slip disc? There are 4 stages of herniated disc depending on the extent of displacement of the nucleus toward the outside annulus. Stage 1 disc compression, Stage 2 bulging disc, Stage 3 disc protrusion, Stage 4 herniated disc. What is the best treatment for disc slip? There are number of different medications for the relief of sciatic nerve pain caused by slip disc. Most of these are painkillers, but you can also use muscle relaxants and anti-inflammatory drugs. How can I fix my slip disc? Non-surgical treatment, self-care. In most cases, the pain from a herniated disc will get better within a couple days and completely resolve in 4 to 6 weeks. Restricting your activity, ice, heat therapy, and taking over the counter medications will help your recovery. Is slip disc were very serious? If one of your spinal disc protrudes, it's called a slipped or herniated disc. This can cause pain and numbness, and if several enough, may require surgery. Your spinal column is made up of series of bones stacked onto each other. Who is at risk of slip disc? People with physically demanding jobs have a greater risk of back problems. Repetitive lifting, pulling, pushing, bending sideways, and twisting also can increase the risk of herniated disc. Genetics. Some people inherit a predisposition to developing a herniated disc. Is slip disc painful? A slip disc is when a soft cushion of tissue between the bones in your spine pushes out. It's painful if it presses on nerves. It usually gets better slowly with rest, gentle exercise, and painkiller.
Is sleep disc permanent? This is one of the common cause of lower back pain, but can also affect the neck and middle of the spine. Not every sleep disc case lasts for a lifetime. Spontaneous regeneration of this injury can occur, with surgery being required only for a few. Several are non-resolving cases. Is bed rest गुड फॉर स्लिप डिस्क? और जब हम डिस्क स्लिप ना कैसे सही होगा, मतलब कि जब हम 2-3 हफ्ते सोए रहेंगे, मतलब कि आराम करेंगे, तो हो सकता है ये स्लिप डिस्क स्लिप सही हो जाए। फिर वरना अगर सही नहीं होता तो फिर मेडिसिन वगैरह यूज़ करने होते हैं। हाउ लॉन्ग शुड बी बेड रेस्ट बी यूज्ड व्हेन ट्रीटिंग अ स्लिप डिस्क? For patient with neck pain radiating down the arm and are diagnosis of herniated disc, there is no need or indication for strict bed rest. Certainly, a day or two of taking it easy and staying in bed is fine, but it should not be done for more than that. Is walking good for disc pain? Staying in bed can cause stiff joints and weak muscles, which are not ideal for an athlete on the mend. Daily walks are an excellent way to exercise with a herniated disc without putting additional strain on your spine and causing painful symptoms to flare up. आज हमने ये सारा डिस्क स्लिप के बारे में पढ़ा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपके लिए कुछ और ख़ास कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है। According to National Human Genome Research Institute, the plasma membrane, or the cell membrane, provides protection for a cell. It also provides a fixed environment inside the cell, and that membrane has several different functions. One is to transport nutrients into the cell and also to transport toxic substances out of the cell. I used it. इनको फाइन करने के लिए इनके डिफरेंट स्टेटमेंट वर्जन और डिफरेंट कलीजन्स के साथ ये मैयर होंगे, और इनको मैयर करने के लिए आपको डिफरेंट एनिमेशंस used in different stages. And what are the use of cell? And cells are used in different criteria of different functions. They are not eligible for the competitive and non-competitive organisms, and they balance to the endocrine system of ecosystem, and hence they are used in protecting against it. They are used in protecting, and different material of albums are used
In it, they are further divided by different resorts, and hence they are approved by it and by the Google certification of system. The balance of endocytosis and exocytosis, the cell membrane plays an important role in all signaling communication. They must be first will be used in different criteria of value, and hence they are improved by it, and they can be criteria of different source of mind, and they are ignorant by the different dedications of method. And their role is obviously used in a different grammar of usage system, which is found they are used in the regulating cell growth through the balance of endocytosis and exocytosis. Cell membrane also plays they relate to the exocytosis of the pharmaceutical companies, and which is formed by exothermic reactions, and hence are used in it. हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हाउ डू यू राइट प्रॉपर फ्रैक्शन? आप प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरीके से राइट कर सकते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन को राइट करने के लिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन ड्रा करने का, और उसकी एड प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेंगी। वह इसका जो फंक्शन है विलॉग फ्रैक्शंस के, कॉमन फ्रैक्शंस या इंड्यूस के यूजुअल के साथ, तो ये इंटीग्रेट करता है अदर सेपरेटेड लाइंस को जो उसके फ्रैक्शन के पार्ट ऑफ यूनिटी सर्विस के साथ यहाँ इंडिकेटर मैथिकली यहाँ पे उनका जो सिस्टम है वो इस तरीके से कॉमनली यूज्ड होगा ताकि उनके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे इंडिकेट हों, और इंडिकेट करने के लिए जो सिस्टम आप यहाँ पे मेजर करोगे तो उनका वल्गर पॉइंट वैल्यू और पॉइंट जो है यहाँ इंडिकेट होगा, और उस तरीके से मैथमेटिकली ये फ्रैक्शन जो है यूनिटी के सर्वल पार्ट्स के अंदर इंक्लूड होगा। वाट आर 12 क्लॉज फ्रैक्शंस के मुताबिक बेस्ड होगा ये तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के एन मुताबिक, लेकिन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है यहाँ वर्कआउट होंगे डिफरेंट स्टेट्स और मेजरमेंट के जरिए। प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ क्या होगा, इंडिकेट होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन को इंडिकेट करने के लिए आपको यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस की बहुत मेजरमेंट होगी, और इक्विवेलेंट यूनिट फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना होगा। A fraction in which numerator and denominator are both are integrand experienced a ratio rather than a decimal, then they are commonly used in the vulgar reaction. They should be multiple two fractions के साथ चीज़ें इंक्लूड होगा। Who is one mixed fraction? डेफिनेशन जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, डिफाइंड होता है हैविंग फ्रैक्शन होल नंबर, और एग्जांपल जो है इसकी यहाँ पे टू सिस्टम ऑफ का क्राइटेरिया है इसके एग्जांपल के अंदर, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो एग्जांपल है तो उनको आपने यूज़ करना होगा ताकि वो आपको यहाँ पे डिफरेंट
और का डिफरेंशियल में यूज होगा मल्टीपल ट्वाइस या फ्रैक्शंस के साथ। और इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन की क्या वो है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो उसको डिफरेंट फ्रैक्शन और डिफरेंट एलिवेशन एक्टिविटी के साथ यहाँ इंडिकेट किया गया है। तो उसको आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए जो या जो पार्टीशंस या प्रोटेक्टिव सबके मुंतखब कर दिए गए हैं, तो उनको आपने यहाँ पे उनके एवोल्यूशन के साथ फाइंड करना है, ताकि आपको उसके इंडिक्शन प्रॉब्लम के अंदर नो वर्ड्स या नो स्ट्रोम्स इंक्लूड हों। तो उनको नो स्ट्रोम्स और नो वर्ड्स के इंक्लूड करने के साथ साथ यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लेना है। और इस तरीके से प्रोडक्शन की मेहनत इमेज के अंदर। और उनके एग्जांपल आप एक लाइन्स के मुताबिक है। पिज़्ज़ा को अगर हम आर्टिकल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें, तो ये एक पार्ट जाके उसका बनेगा और यहाँ पे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, टेकन आउट किया जाएगा 1/2 स्क्वायर के मुताबिक। और इसको इंक्लूड करने के लिए आपको डिफरेंट मेजरमेंट की ज़रूरत होगी, जो उसके इग्नोरिंग पॉइंट के हिसाब से यहाँ मेजर्ड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।